Tony Shaw's alive word. इग्नू में आप सबका खैर मकदम है डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो ये कोर्स BEGC 132 है, इसका जो अनुवाद है वो है सिलेक्शंस फ्रॉम इंडियन राइटिंग कल्चरल डाइवर्सिटी। तो ब्लॉक 1 में हमने प्लूरलिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में बात की। ब्लॉक 2 में हमने लैंग्वेज पॉलिटिक्स यानी कि हिंदी, उर्दू और इंग्लिश के बारे में बात की। ब्लॉक 3 में हम मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस के बारे में बात कर रहे हैं। ब्लॉक 4 की तरफ जो हम जाएंगे तो वहां पे हम विमेन स्पीक की बात करेंगे। तो पहले हम दलित के बारे में भी जो हम ब्लॉक 3 हम मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस जो हैं, इन मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस को हम दबी हुई आवाज जो है यानी कि जो मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस हैं ये पसमानदा तबके के लोग होते हैं, इनको मेन स्ट्रीम कल्चर में उतनी जगह नहीं मिलती है। ये डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी होते हैं, या एजुकेशनली बैकवर्ड होते हैं, इकोनॉमिकली भी ये बैकवर्ड होते हैं, और पॉलिटिकल सेटअप में इनका उतना यानी कि इनका उतना इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तो जो मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस को हम बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो जब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस की बात करते हैं तो हमारे इस ब्लॉक में मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस में जो पसमानदा तबका है वो दलित्स है। तो हम दलित्स के बारे में बात करेंगे। तो द वर्ड दलित लिटरली मीन्स ब्रोकन पीपल। तो जो ही देखिए आपने ये इस तरह समझना है कि देखो जब हम इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं यहाँ पे बहुत सारे तबके के लोग रहते हैं। तो जब हम जब हम हिंदुइज्म की बात करते हैं तो वहां पे जो लोग हैं इनको कास्टिज्म की बुनियाद पे देखा जाता है। वहां पे एक हायरार्की आपको मिलती है, एक लैडर आपको मिलती है। तो वहां पे जो लोग हैं वो बहुत सारे कास्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो दलित जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रियाज हैं, वैश्याज हैं या शूद्राज है। तो जो इंडियन कास्टिज्म है, कास्ट सिस्टम है हिंदुइज्म में, तो उसमें जो अपर स्ट्रेटा के जो लोग हैं उनको मोस्टली ब्राह्मण्स के नाम से हम जानते हैं, जो प्रीस्ट क्लास से ताल्लुक रखते हैं, जो एजुकेटेड क्लास होते हैं, या इवन कुछ जो और तबके होते हैं वो मर्चेंट क्लास से ताल्लुक रखते हैं। जो लोअर जो डाउन ट्रोडन सेक्शन इस हायरार्की में आपको नजर आता है उनको हम दलित्स बोलते हैं। दलित्स की जो पोजीशन है इस हायरार्की में वो सबसे नीचे है, तो निचली जात के ये लोग हैं। We would try to learn about Dalits in a detailed manner a little while later. Dalits, who are these Dalits? What is their main profession? Why are they being treated as what Gayatri Spivak calls the other? तो पहले हम थोड़ा सा डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। तो जो ही हम दलित वर्ड की बात करते हैं इनको लिटरल मीनिंग में ब्रोकन पीपल बोलते हैं। तो यहाँ पे लिटरल जैसे जब भी आप लिटरेचर का मुताला करते हो, जब भी आप लिटरेचर पढ़ते हो, इट्स नॉट ओनली कन्फाइंड लिमिटेड टू लिटरेचर, इट इज यानी कि जब आप कोई भी बुक पढ़ते हो वहां पे आपको दो तरीके की मीनिंग्स मिलती है। एक को हम डिनोटेशन बोलते हैं, दूसरे को हम कनोटेशन बोलते हैं। डिनोटेशन में आपको डिनोटेशन क्या, व्हाट इज दिस डिनोटेशन? डिनोटेशन सिंपली मीन्स लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड और द मीनिंग व्हिच इज अपैरेंट, सुपरफिशियल, द मीनिंग व्हिच यू जो डिक्शनरी मीनिंग जिसको हम बोलते हैं। तो उस जैसे कभी कभार हम बोलते हैं कि अगर मैं फॉर इंस्टेंस आई एम टेलिंग यू कि हेयर इज अ स्टोन, तो मैं किसी ऑब्जेक्ट की तरफ रेफर करता हूं, तो वह यानी कि मैं स्टोन की तरफ आपको इशारा कर रहा हूं, स्टोन, पत्थर। तो दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस स्टोन। व्हेन आई से यू possess a stony heart, you are a stony hearted man, तो वहां पे यही
यानी कि आप पत्थर का दिल रखते हो, तो हियर मीनिंग गेट्स चेंज। तो कनोटेशन का मतलब होता है कि हिडन मीनिंग, यानी कि लिटरल मीनिंग से आपको थोड़ा सा गहराई की तरफ जाना होता है। बड़े आपने जब आप कोई टेक्स्ट का मुताला करते हो, जब आप कनोटेशन की तरफ जाते हो, तो फिर आप यानी कि उस टेक्स्ट में आप कनोटेशन कनोटेटिवली कुछ ढूंढना चाहते हो, देन you find, the author is using lots of symbols, metaphors, personification, allusions, intertextuality, metafiction, all the major literary techniques। तो वहां पे आपको बड़ी गहराई से पढ़ना होता है, तो फिर आप वो हिडन मीनिंग जो होती है वो आपको फिर मिलती है। तो जब हम लिटरल मीनिंग दलित का निकालते हैं, तो इनको ब्रोकन पीपल बोलते हैं, बिखरे हुए लोग, यानी कि जो लोग हु आर डिसएनफ्रेंचाइज्ड in the Indian caste hierarchy. The position at the lowest rung is known as the untouchable or the Dalit. We were talking about this little while ago, that there is this casteism, the caste system in India. It is deeply embedded in Indian society. That जब आप हिंदुइज्म की बात करते हो, तो वहां पे कास्टिज्म का बहुत दबदबा है। तो इस कास्टिज्म को एक हायरार्की में रखा जाता है। जो लोग हैं, लोगों को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है एज पर देयर कास्ट, एज पर देयर कास्ट। जो उनकी कास्ट होती है, उनकी क्या हायरार्की में पोजीशन है। तो जो दलित्स हैं, उनको लोवेस्ट रंग में रखा जाता है। बड़े निचली जात हैं ये, बड़े यानी कि निचले तबके से ये लोग आते हैं। तो जो ही जब भी यानी कि इनको अब आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, यानी कि इनको आप इनका प्रोफेशन देख के आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये और द पर्सन इज बिलोंगिंग टू दलित कम्युनिटी। तो they lived and many of them still live a precarious existence. But when you do a critical analysis of this casteism in Indian context, you always find Dalits, they are living a precarious life. They feel they are going through the phase of identity crisis. They feel they are a rejected lot. They are not being given due respect, attention in the society. They feel, they are being discriminated and they are being abused by the upper caste people. So this casteism, we talked about this during the last lecture as well, that when when जब भी कोई निचली जात के से ताल्लुक जो रखता है, उनको जो एक डोमिनेंट कास्ट जो होती है, वो उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनके साथ इनजस्टिस करते हैं, उनको दे ऑलवेज लुक डाउन अपॉन देम। तो वैसे ही दलित्स के साथ होता जा रहा है। It has been, since times immemorial, that Dalits are facing this problem of identity crisis, discrimination. They are being rejected, even abused by the people who belong to upper caste. तो जब हम दलित्स की तरफ देखते हैं, they were forced to work in degraded conditions, denied the right to acquire land, and rendered almost to an inhuman state. So when you look at Dalits, when you look at this hierarchy of Indian caste system, you see Shudras, Dalits, untouchables. These are other names of Dalits, चाहे untouchable के नाम से बोलोगे इनको, या Shudras के नाम से भी इनको जानते हैं लोग। When you look at their profession, they mostly are engaged in menial work. Their profession is like, they are always engaged in works, जैसे 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 स्वीपर्स का काम ये करते हैं, लेट्रिन्स की सफाई करते हैं। ये इनको मोस्टली इन्हीं कामों में यानी कि रखा गया है। और इनके साथ एक और डिस्क्रिमिनेशन है कि दे आर बीइंग डिनाइड टू एक्वायर द लैंड। In fact, they are not in a position to acquire the land. Such are their economic condition. They are not an affluent class. So when you see these Dalits, उनका प्रोफेशन भी उतना अच्छा नहीं होता है, उनके पास जमीन भी उतनी नहीं होती है, they are not
they don't find even a place in political setup. So they're, they are rendered to almost to an inhuman state. Thus the literature born out of this suffering. जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो ये दलित हैं, इनको निचली नजर से देखा जाता है, इनको जो डोमिनेंट कास्ट है इंडियन सोसाइटी में, इनको वो जो लोग इन दलित को दूसरी नजर से देखते हैं, इनको इन कुएं से पानी भी नहीं निकालने देते हैं, इनको इवन कभी कभार ऐसा भी होता है, इनको जैसे वो पूजा करते हैं, उनको कभी कभार टेम्पल्स में भी नहीं आने देते हैं। तो इस सफरिंग को जो ये सफर जो ये लोग करते हैं, जो ये इनजस्टिस फील करते हैं, जो इनइक्वालिटी, ये इनको जो इक्वल स्टेटस नहीं मिलता है सोसाइटी में, तो जब कोई बंदा उन चीजों को उजागर करता है, उन चीजों को डिस्प्ले करता है through the form of writing, so that is being called a literature. Actually, what is a literature? Here the question arises, what is a literature? Literature is actually a body of written works. So it is, applied mainly to three genres of literature. It's mainly applied to three genres. One is called poetry, and the other one is called prose, and the last one is drama. Then they are having their own subgenres. For instance, if you are going to talk about prose, then in prose you study, you read short stories, autobiographies, biographies, essays. When you talk about drama, in a drama you read tragedies, comedies, romance plays, farce. And when you talk about poetry, in poetry you have subgenres like, a poem could be written in the form of ode, in the form of lyric, elegy. तो जो लिटरेचर है एक्चुअली it displays, actually, human emotions, sentiment. It deals with human life. It tries to depict human life as it is. So there is this element of realism in literature. That means a writer always wants to portray things as they are, and more importantly, it try, just say it actually it is depicting things which are having universal or permanent, which are a permanent or universal interest. When I say universal interest, literature is equally applicable to all, people from all walks of life. For instance, if you are going to talk about sciences, be it physics, chemistry, biology, maybe these subjects are confined or in, to those people who are interested in it. Maybe a subject like chemistry would not appeal a shopkeeper, even a politician. But here, literature differs from other branches of knowledge. For instance, when a shopkeeper could be interested in, listening to, whenever he listens, hears a ghazal, he tries to, imagine that whatever is written in that ghazal, he actually equates that ghazal with his own life, with his own situation. तो कहने का मतलब ये है कि लिटरेचर जो है ये अदर ब्रांचेस ऑफ नॉलेज से इसमें डिफरेंट है कि it appeals actually men from all walks of life. तो जब हम दलित लिटरेचर की बात करते हैं, दलित लिटरेचर में आपको ज्यादातर यही मिलता है कि जो इनकी सफरिंग्स के बारे में लिखा जाता है, इनको कैसे ट्रीट किया जाता है सोसाइटी में, ये किस मरहले से अपनी लाइफ को गुजारते हैं। तो यहाँ पे मेरे जहन में एक मुल्कराज आनंद की बात, मुल्कराज आनंद की नॉवल मेरे जहन में आ रही है। उसकी एक नॉवल है अनटचेबल। We talked about this during the previous lecture as well. If you are interested, to know or to read the condition of Dalit people, the sufferings, the injustice, the pain and agony of Dalit people in an imaginative way, then read Mulkraj Anand's Untouchable. There's a wonderful piece of work on Dalit literature. That work it's a novel, it was written way back in 1930s, and the protagonist of that novel is Bakha, who belongs to this Dalit community.
तो उसमें बड़े इमेजिनेटिव वे में आपको मुल्क राज आनंद इनकी सफरिंग्स दिखाता है, इनको लोग कैसे ट्रीट करते हैं सोसाइटी में। इट्स अ मस्ट रीड बुक, यू शुड रीड इट। So the medium of expression in Dalit literature is poetry. When you talk about Dalit literature, so literature which comes from Dalit community, literature, where you find the feelings of Dalit people. Mainly, it is confined to the genre of poetry. Autobiographies are written in Dalit literature, and as well as short stories. There is also pertinent question on whether Dalit literature can only be written by Dalits, since Dalit literature, as mentioned above, is an expression of the lived experiences of discrimination and oppression. तो यहाँ पे here the question arises. It's a pertinent question, very relevant question, a question which needs to be asked, not only asked, a question which needs to be answered, thoroughly, comprehensively. So the question here arises is, can Dalit literature be produced only by the people who belong to the Dalit community? It's a question for you. You just imagine, you just think for a while that is it possible that the literature, Dalit literature can only be produced, can only be written by the people who belong to Dalit community? Or is it like that Dalit literature can be produced, can be written, by the people who don't belong to Dalit community, who are non-Dalitis? So it's pertinent question. So यही क्वेश्चन है, कैन नॉन दलित राइटर्स एंड देयर वर्क्स इफ इट रिलेट्स टू दलित बी कंसीडर्ड एज दलित लिटरेचर? तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये है कि क्या जो दलित लिटरेचर है ये खाली वही लोग लिख सकते हैं जो दलित कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं? क्योंकि जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिटरेचर में आता है, जैसे दलित की फीलिंग्स हैं, दलित की जो कंडीशन है, जिस कंडीशन में वो रह रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशन हो, चाहे वो पॉलिटिकल कंडीशन हो, चाहे वो उनको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो, या उनका प्रोफेशन हो, it's always better that only Dalit could communicate those feelings in the best possible way than a non-Dalit writer. But when it comes to literature, literature is a broad term, it's an umbrella term. So Dalit literature can even be produced by the people, can be produced by the writers who don't belong to the Dalit community. So here it's now clear that it's explicit now that even a non-Dalit writer can write about Dalit community, about the conditions, sufferings, agony, pain, which through which the Dalit community go through, the conditions which they experience day in and day out. Perhaps तो यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट एक चीज ये है कि आप कितने इंटरेस्टेड हो दलित, अगर फॉर इंस्टेंस इफ यू आर अ नॉन दलित राइटर and you are writing about Dalit community, so what you need to have, you have to have sympathy, you have to have empathy with Dalit community. Unless and until you don't imagine, you don't feel for Dalit community, the conditions they go through, the phase of trials and tribulations they experience, on and off, then you can't produce a good piece of literature. तो जब हम लिटरेचर की बात करते हैं तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि लिटरेचर इज ऑफ टू टाइप्स. थॉमस डिक्वेंसे एक रोमांटिक राइटर, थॉमस डिक्वेंसे, ही वाज अ रोमांटिक राइटर, ही बिलोंग्ड टू romantic era which is roughly the age of Wordsworth and S.T. Coleridge, the age in which the great romantic writers like John Keats, P.B. Shelley, even जैसे Charles Lamb, William Hazlitt were writing. So there was another important writer of romantic era whose name is Thomas Dickens. Thomas Dickens actually distinguishes or categorizes literature into two types. He says literature is of two types. One he named as literature of fact, and the other one he labeled the literature of knowledge.
तो literature of जैसे literature of knowledge, the first one he names as literature of knowledge and the other one he names as literature of power. The literature of knowledge actually deals with facts. It deals with day-to-day reality. It depicts the things as they are. So this is a literature of knowledge. आपको दिन भर जैसे कभी कभार आप देखते हो कि जो फैक्चुअल नॉलेज आपके पास लाता है, उस फॉर्म को थॉमस डी क्विंसी calls literature of knowledge, where from you get information, knowledge about day to day affairs of life. For instance, literature of knowledge की जब आप बात करते हो, when you read Charles Dickens, any novel, be it Hard Times, Great Expectations, A Tale of Two Cities. A Tale of Two Cities, it's a wonderful novel. Actually, that novel begins with those lines, those memorable lines. It was the best of times, it was the worst of times. तो जब आप उन नॉवेल्स को पढ़ते हो तो वहां पे आपको, जब आप A Tale of Two Cities पढ़ते हो, when you read this novel, what you get from this novel, you learn that in this novel Charles Dickens he's talking about the war which happened during in the 18th century or in the 19th century between France and England. So you are getting factual information from this novel, although you are being provided factual details, factual account of the war, but in an imaginative way. When you talk about literature, when you read literature, remember one thing: it's always written in an imaginative way. Here I remember famous William Wordsworth's definition of a poet. William Wordsworth says, a poet, if you can become a good poet, a great poet, a substantial poet, a poet who could produce, who could contribute towards the society. He says a good poet a good poet is one who is having a comprehensive soul, whose imaginative power is immense. यानी कि unless and until you don't possess imaginative powers, you can't produce a work which would remain, for years, for decades. So, if you want to become a writer, a good writer, if you want that your books are, remain until eternity, then you need to focus on this imagination. Talk about any great writer, be it William Shakespeare, John Keats, T.S. Eliot, or even if you are going to look at Urdu literature, then you are having poets like Mirza Asadullah Khan Ghalib. Then you have poets like Allama Iqbal. See the imagination power. For instance, Ghalib writes somewhere, "हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं होती." This is Ghalib for you. This is his power of imagination. हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं होती. And when you read Iqbal's poetry, you find the ultimate, the limitless power of imagination. Iqbal, he says, when you read his poems, वहाँ पे एक अलग तरीके की imaginative power आपको मिलती है उनकी, उन गजलों को, उनकी जो शायरी है, जब आप उनको पढ़ते हो, उनके पोएम्स को पढ़ते हो, तो जैसे वो लिखते भी हैं कहीं पे, हर शीशा टूट ही जाता है पत्थर की चोट से. This is, maybe you could say this is a factual point. Maybe Iqbal has said this though he had written it in an imaginative way, but there is this factual information that हर शीशा टूट ही जाता है पत्थर की चोट से. Now look at the second line. वो लिखते हैं कि हर शीशा टूट ही जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर. यानी कि वो लिखते हैं, वो गजल जैसे वो बिगिनिंग लाइंस इसकी है, मंजिल से आगे पढ़कर मंजिल तलाश कर. दिस इज
supreme power of imagination. मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट ही जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, बदल दे जो तेरी दुनिया वो सजदा तलाश कर। तो कहने का मतलब, इवन here I am reminded of Robert Frost, one of the phenomenal poets of American literature. He had he writes somewhere, the woods are lovely, dark and deep, just to concentrate on each and every word and see the level of imagination, the height of imagination, the height of imaginative powers these poets, these writers possess. He says, the woods are lovely, dark and deep. Actually, this power of imagination makes the writer a different entity from the normal citizens, from cities, from people like us who are non-writers. Maybe we too are writers, we too could be writers, but उनकी जो पावर ऑफ इमेजिनेशन है वो एक सुप्रीम लेवल की होती है. Just to concentrate on this stanza of Robert Frost, he says, "The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep." Actually, a good writer uses his imaginative power. वो उस पावर के जरिए वो एक जो रीडर होता है वो आपकी इमेजिनेशन को भी बढ़ाता है, आपके जो मेंटल हो, जो आपके जो पावर आपके पास है इमेजिनेशन का, उसको भी ब्रॉडन करते हैं. So we are talking about William Wordsworth. William Wordsworth says, a good writer, a good poet needs to have, or needs to have greater power of imagination. Yani कि if you want to become a good poet, then you must concentrate on this power of imagination, and you will have to think again and again. Then Wordsworth says, besides this power of imagination, that a poet needs to have a comprehensive soul. He says that the poet needs to talk in a language which is understandable, which could be understood by all people. So that's why William Wordsworth says in his theory of poetry, when he talk about when he gives the definition of a poet, when he says the poet needs to have these features, one important feature he says, Wordsworth says that a writer, a poet needs to put his thoughts, views in a rustic language, a language which is understandable, which even an ordinary citizen could understand. And what is actually here the question arises, what is the purpose of a communication? The purpose, one of the fundamental features of communication is that when you communicate, you want to send your message to someone. You are having this thought in mind that this mind message needs to be addressed. You are addressing your message to someone, and there is this thought in your mind that it needs to be understood in the best possible way, the way you want that it should be understood in this way. So the purpose of communication is that it needs to be understood. The message needs to be read by the audience in a better way, unless and until, for instance, if you are when you read literature of for instance novels of James Joyce, even poetry of T.S. Eliot, और जैसे वो पोएम्स आप पढ़ते हो, देन आपको बहुत डिटेल्ड वे में वो पढ़नी पड़ती है. आपको, अगर आप एल्यूजन से आप वाकिफ नहीं हो, इंटरटेक्सचुअलिटी से आप वाकिफ नहीं हो, आप एलियट की थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी से वाकिफ नहीं हो, आप एलियट के उनका जो पर्सनल बैकग्राउंड है, उनकी जो राइटिंग्स हैं, उनसे आप वाकिफ नहीं, देन you could hardly understand a poem of T.S. Eliot. You would find, in T.S. Eliot's poetry, the technique of intertextuality. He had used allusions in an abundant manner in his poetry. So, जब आप, for instance, he is always referring to William Shakespeare's plays,
Dante's Dante's Divine Comedy. He's at times referring to Spenser. He's at times going back to Geoffrey Chaucer's poems, taking characters there from the Chaucer's poetry, taking some a line from William Shakespeare's play. So that becomes difficult for you. So that was why that is which is why Wordsworth was of the opinion that a poem needs to be written in a simple way so that each and every person understands it. तो फिर हम लिटरेचर ऑफ यानी कि लिटरेचर ऑफ फैक्ट के बाद लिटरेचर ऑफ नॉलेज के बाद आपके पास लिटरेचर ऑफ पावर है, जो टॉमस वी आर टॉकिंग अबाउट Thomas DiClemency. Thomas DiClemency's definition of literature. He actually says literature, it deals with human life. It depicts the condition of human beings. It displays the sentiments, the feelings, the opinions of human beings. It is actually whatever it displays reflects those thoughts are of universal and interest. So they are having a permanent place in human memory, those thoughts, those things. तो अब लिटरेचर ऑफ पावर की जब हम बात करते हैं, which Thomas DiClemency says it, actually it's a higher branch of literature. It appeals your reason. It actually, जैसे वहां पे लिटरेचर ऑफ नॉलेज और पावर की जब आप बात करते हो तो वही फिर बात आती है आर्ट फॉर आर्ट सेक, art for life's sake. Again, two more important terms which I want to talk about with you people so that you could understand. Literature is mainly written in two forms. One we name as art for art's sake, and the other one we name as art for life's sake. So when we talk about art for art's sake, mainly we say this is a literature, a pure literature, a literature of emotion, literature of sentiments, a literature where you don't see the theme of didacticism. When you read art for art's sake, when you read a piece of literature which you categorize as art for art's sake, you find there a writer is never becoming a teacher for you. He's never telling you should avoid this thing, you should inculcate this trait and have this trait or habit in you. So art for art's sake, it's actually a literature which is written for art's sake, where you see only the emotions of a writer. He's never ever, in art for art's sake, you always find a writer is never having any didactic purpose. He never wants to become an instructor for you. He doesn't want to instruct you that you should do this thing or you should avoid that thing. So in this category, mostly writers say Shakespeare's art is for art's sake, John Keats's art is for art's sake, or even when you talk about Urdu language, you say Mirza Asadullah Khan Ghalib's art is for art's sake, because you don't find in their writings that they are appealing you. They don't want to change your character, they don't want to change your lifestyle. तो इसमें art for art's sake में वही आता है. Although there are reservations about these writers, you could even refute that Shakespeare's art is for art's sake, or even Mirza Asadullah Khan Ghalib's art is for art's sake, or for that matter John Keats wrote for writing's sake. No, you even find in their writings somewhere down the line they are even trying to catch your attention. They want to even change your temperament. They write about the human desires. तो अब ये है कि आर्ट फॉर आर्ट सेक में जो राइटर होता है वो प्योरली अपने जज्बात को हमारे सामने लाता है. आर्ट फॉर आर्ट सेक में आपने याद रखना है कि जो राइटर होता है उसका कोई डायडेक्टिक पर्पस नहीं होता है. उसका ये पर्पस नहीं होता कि वो आपके कैरेक्टर पे मुतासिर हो जाए, वो आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहता है. तो फिर वो दूसरी कैटेगरी में आपको आता है आर्ट फॉर लाइफ सेक. मेजॉरिटी ऑफ द राइटर्स
belong to this country, it belong to this category. यानी कि great writers. If you are, if we look at the poetry of Allama Iqbal, we just a while ago, talked about his, a poem. We talked about his a poem, wherein he says, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। या इवन एक और लाइन में वो लिखते हैं कि सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, बदल दे जो तेरी दुनिया वो सजदा तलाश कर। When you read, study Iqbal's poetry from a critical perspective, so you find Iqbal is teacher. He's a teacher for you. He's an instructor for you. He wants to change your temperament, your character, your even living style. Iqbal feels you are living a life which is, which is not sacred, which is impious, which is which is profane. So he says in his poems, he again and again puts emphasis on this theme that you should live a life which is in accordance with Sharia, which is in accordance with Quran and Sunnah. So he's a teacher for you. So Iqbal is not an exceptional case. Even talk about William Wordsworth. William Wordsworth, in his poems, when we read William Wordsworth's definition of poet, even William Wordsworth has, he had categorically said that whenever you are going to read my poetry, that means William Wordsworth's poetry, he says, you know, consider me always a teacher and nothing else. So this is Wordsworth speaking, talking about his own self, talking about his own poetry. He's talking about his own writing, that he's telling his readers that whenever, as and when you are going to take my writing in your hand, my work in your hand, consider me. This is important, very important, that whenever you read William Wordsworth's poetry, you will have to remember one thing, that is this, consider him as a teacher. So again and again, when you read his poetry, when you read his poems, William Wordsworth is a teacher for you. He's exactly similar, in a similar way as Iqbal is a teacher for you. वैसे ही अगर आप टी.एस. इलियट की बात करोगे, a wonderful poet of a modern English literature. He won the Nobel Prize for Literature as well, way back in 1948. It's been said that the modern English poetry, chiefly rests on two poets. जैसे हम एक तो है टी.एस. इलियट and the other one is W.P. Yeats. Both got the prestigious, coveted Nobel Prize for Literature. So जैसे उर्दू की हम बात करते हैं, उर्दू में भी कहा जाता है कि उर्दू पोइट्री chiefly rests on two poets. So it's being said that when you will have to read, when you want to read Urdu poetry, when you want to judge Urdu literature, you want to judge the height of Urdu literature, the power of imagination Urdu poets possesses, Urdu literature possesses, then read Iqbal and Ghalib. These are the two towering personalities of Urdu literature. तो इनकी पोइट्री को समझना, इनकी पोइट्री को जब आप पढ़ते हो तो आपको फिर समझ आएगा कि व्हाट इज दिस उर्दू लिटरेचर. तो वैसे ही इंग्लिश पोइट्री की जब हम बात करते हैं, मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री की बात करते हैं, तो वहां पे टी.एस. इलियट आपके सामने है, W.B. Yeats आपके सामने है. तो बट here I would like to mention one more important point with you, that modern English poetry is not confined to these two poets only. You have a number of poets in English language, who wrote during the modern era, especially when the first war broke out, or even during the Second World War. There were poets. Even W.H. Auden was there. Even Thomas Dylan Thomas. बहुत सारे पोइट्स थे जिन्होंने पोइट्री लिखी थी. तो वैसे ही उर्दू लिटरेचर में भी आपको बहुत सारे पोइट्स मिलते हैं. सो एक्चुअली ये कुछ राइटर्स हैं जिनमें आपको कुछ ज्यादा चीजें मिलती हैं जो शायद बाकी राइटर्स में आपको नहीं मिलती हैं. बट इट डजंट मीन, फॉर इंस्टेंस,
when we read Urdu literature, when we read the poetry in Urdu language, uh, besides Ghalib, there are a number of poets who have written, uh, memorable verses, memorable poems, poems of universal interest. Even here, I am reminded of Mirza Asadullah Khan Ghalib's contemporary, whose name is, if I'm not mistaken, Muhammad Ibrahim, Sheikh Muhammad Ibrahim Zouk. Zouk was his pen name. His original name was Muhammad Sheikh Muhammad Ibrahim. So he used to write under this pen name called Zouk. He was a contemporary of Ghalib, Mirza Asadullah Khan Ghalib. They both were living during the same era. Even they were having, you know, rivalry between each other. Ghalib was having, even, they were not they were writing poetry against each other. जब भी आप गालिब की पोइट्री पढ़ते हो तो वहां पे आपको बहुत जगह पे आपको वो मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक को तंज के अंदाज से वो उनके उनके ऊपर लिखते हैं। वहीं से आपको मिर्जा जो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक है वो भी मिर्जा असदुल्ला खान गालिब पे तंज करता था। Actually, how this rivalry broke out, there was a reason that Ghalib was a phenomenal poet. Even during his own days, he was respected, hugely respected by the literary critiques of his own era. People, even जो भी जब भी royal poets की बारी आती थी, तो there was this thought that Ghalib should be named as the royal poet, दरबारी शायर जिसको बोलते हैं. But he was not lucky enough to get this coveted position that he would become a royal poet, darbari shair. But Muhammad Ibrahim Zouk, he was, he became this royal poet. तो एक्चुअली फिर वो एक राइवलरी थी इन दो पोइट्स के दरमियान. Like even Mirza Sadullah Khan Ghalib, although we know Ghalib is a phenomenal poet, he is a poet who is a poet like Ghalib is born once in 100 years. Such temper, such imaginative powers that man possessed, a comprehensive soul he had. He was a futuristic. He could predict things which is beyond our imagination. A great poet. अभी हम विलियम वर्ड्सवर्थ की बात कर रहे थे. A good writer is always a futurist. He's having a broad vision. He's always ahead of his time. He actually could predict what's going to happen in future. Although his predictions may not be as fruitful as जैसे वो लिखता है, लेकिन most of the time is a good writer. Whenever he predicts that this thing is going to happen, when he writes about something which has not yet taken place, those things ultimately take place in future. That's why they are being called futurists, that they write about the events which are going to take place in future. If you are going to apply this futuristic thought in English literature, then you have George Orwell. George Orwell was a futuristic writer. Even Ray Bradbury, he even too was a futuristic writer. When you read his There Will Come Soft Rains, There Will Come Soft Rains, it's actually a prose work written by Ray Bradbury. It was written way back in 1950s. Actually, this story, There Will Come Soft Rains. In this story, Ray Bradbury is talking about the year 2026, 2026 की बात. Even though we are sitting in 2024, 2026 is still 2.5 years away from us. But the man Ray Bradbury had talked about this 2026 in 1950. When he wrote this, There Will Come Soft Rains. If you are interested to know, this his power of just this power of imagination, his visionary power, his futuristic ideas, then you need to read his
There will come soft rains. It's a prose work written by um, Ray Bradbury. It's a wonderful piece of literature. I'm leaving this to you that you read it, then you will come to know what is going to happen in 2026. I mean, you would read the things in this story. I mean, maybe you might have witnessed those things. You are still, those things are still happening in your surrounding. So later on, when you are going to finish that story, then just imagine, was Ray Bradbury right in his in his opinion? I mean, in his prediction, are his predictions valid or not? So what you need to do is you need to read this story called There Will Come Soft Rains. Once you are done with the story, you can just imagine, sit down in a relaxed manner. At times when you read literature, you have to you need to possess critical bent of psyche. You will have to read works from a critical perspective. You will have to apply your own brains. Leave theorists aside. Leave theorists, giant theorists like, when you read philosophers, theorists like Derrida, Karl Marx, Gayatri Sipiva, Edward Said, Saussure, Ronald Barthes. There are this theory of deconstruction, even Michel Foucault, Nietzsche. You need not to apply the theories which have been given by them. You just apply your brains and read. There will come soft rain. It's a simple question to you. You read this story and just sit down in a relaxed manner and ask yourself: was Ray Bradbury right, correct in his prediction or not? Can we label Ray Bradbury a futurist writer or not? I mean, was he right in his predictions or not? It's only possible when you read, once you are done with this short story, this prose work, then you could evaluate, and you could, put your this opinion. You could say yes, Bradbury is right or wrong. So here we are talking about futuristic writers, a writer who is having a broader vision, who is living in his society but is always ahead of his time. You might have read George Orwell's wonderful piece of literature, another important novel, that is called 1984. तो उस 1984 को जब आप पढ़ते हो, एक्चुअली यू विल जस्ट इमेजिन, I mean, what power these writers possess. I mean, they are obviously, uh, जैसे ये writers हैं, actually, I mean, we become speechless. For instance, Ghalib writes somewhere, मेहरबां हो के बुला लो मुझे चाहे जिस दम, मेहरबां हो के बुला लो मुझे चाहे जिस दम, मैं गया वक्त नहीं कि फिर अभी ना आ सकूं. This is Ghalib for you, actually showing his potential, showing what sort of writer he was. He was conscious of his greatness as an artist. Again, important point which I would like to share with you is this: a great writer is always aware of the fact that there is something in him. He's always conscious of his greatness as an artist. To talk about William Shakespeare, he even writes in one of his sonnets, as long as men can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. So again, Shakespeare talking about his power called pen. He says, I am going to be immortal. I am going to live, until eternity. I am going to live for the ages, even after my death, even though I won't be physically on this planet, but people will read me, people will talk about me, people would again and again, take my name on their lips. So it's possible when? It's possible only in the name of writing. He's becoming immortal. He's an immortal soul for us. Through what? Writing. Through his pen. He's with us. It's applicable to all great writers, be it Allama Iqbal or even Maulana Rumi or even Imam Ghazali.
ग्रेट राइटर्स, चाहे आप किसी भी लिटरेचर की बात करोगे। तो अभी हम ये लिटरेचर की बात करें तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है कि जो लिटरेचर है, जो एक राइटर होता है, इसके पास इमेजिनेटिव पावर होता है, इसके पास एक बड़ा कॉम्प्रहेंसिव सोल होता है। ही टेक्स इंटरेस्ट इन इवन इन ऑर्डिनरी matters, in ordinary objects, the objects maybe we are not interested in. So that is why William Wordsworth says in one of his writings that whenever we tread on a path, when we walk, at times we, tremble, down this floor, under our feet. But he says, whenever जब भी आप कभी कभार सड़क पर चलते हो, कभी कभार कुछ चीजें हमारे पांव तले आते हैं, तो हम ऐसे ही चलते हैं। लेकिन we, a great poet like William Wordsworth, a poet of nature, perhaps one of the greatest poets of nature ever born in English literature, he says, हमें जख्म पहुंचता है, we are getting deeply bruised, we are deeply wounded when we feel, when we see, when we observe someone is, walking on this flower, he's keeping his feet on this flower. So this is how, I mean, the love these people have for natural objects. तो जब हम विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ was a romantic poet. Again, this trait you find in romantic poetry, that all those poets, they were poets of nature. They talked about great objects of nature. For instance, William Wordsworth says a poet is always in nature with natural objects, be it an ocean or a river, or even objects like, moon, sky, stars, flowers, trees, mountains, rivers, oceans, streams, plants, trees, even leaves. Here again, I'm reminded of a great, again, another important poet of romantic era, John Keats, or even you could even bring the name of P.B. Shelley. They've talked about the seasons. They've talked about autumn. They even John Keats writes in one of his poems, about the autumn, how the leaves are falling from the branches. Even Faiz Ahmad Faiz had talked about this. A great writer, great writers, they are always in love with nature objects. तो जो ही नाउ कमिंग बैक टू दी एक्चुअली, अभी हम लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर में ये होता है कि एक जो राइटर होता है ये बहुत सारी चीजों के बारे में लिखता है। अगर आप दलित लिटरेचर की बात करोगे, दलित लिटरेचर में आपके सामने क्या होता है? दलित लिटरेचर में जो राइटर होता है, he is actually trying to portray the feelings, the emotions, the sentiments of Dalit community. He is displaying their life, the day-to-day life, the affairs of life. I mean, how these people love how these people live their life. I mean, at times they are depicting in their writings that the community, they are going through the phase of trials and tribulations. They go through this phase of agony, pain. They are being looked down upon by the upper caste people. We talked at the very outset when we just opened this discussion on Dalit problem. I talked about that there is this novel written by Muluk Anand, Untouchable. Muluk Anand, again, important writer of Indian English literature. In fact, he is one of the founders of modern Indian English novel. In fact, we can say safely that he's one of the founders of Indian English fiction, along with R.K. Narayan and Raja Rao. These are the trios of three great writers of Indian fiction. I mean, these three writers have laid the foundation of Indian fiction writing in English. तो इनका अपना एक मयार है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में। तो एक्चुअली दे आर द वंस हु स्टार्टेड राइटिंग fiction in English language. Although there were a couple of writers prior to them who had written in English as well, but actually novel
flourished. Novel actually, actually they have written novel the way Western writers were writing during those days. तो जब आप मुल्क राज आनंद की बात करते हो, या आर के नारायण की इम्पोर्टेंट नॉवल है द गाइड, अगेन उसकी एक और नॉवल है वेटिंग फॉर महात्मा, बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो व्हेन यू टॉक अबाउट राजा राव, उसकी भी एक नॉवल है, इंपॉर्टेंट नॉवल है कांतपुरा। Actually, this novel Kantapura is actually, or Raja Raw's Kantapura, R.K. Narayan is Waiting for Mahatma. Actually, these are the two novels which depicted the actually they depicted the conditions, pre-independence era conditions, or how the Indian subcontinent was facing the brutal power of imperialism, how the colonial powers were looting the natural resources of Indian subcontinent, how they were subduing, oppressing the Indian in the people in Indian subcontinent. तो ये इन दो नॉवल से आपको यही मिलता है। तो एक्चुअली ये प्री इंडिपेंडेंस एरा की नॉवेल्स हैं। तो उसी दौर के आसपास मुल्क राज आनंद भी अनटचेबल नॉवल लिखते हैं। उसमें भी आपको थीम ऑफ कोलोनियलिज्म मिलता है, उसमें भी आपको वही जैसे बाखा के जैसे वो कुछ वेस्टर्न कैरेक्टर्स उसमें क्रिएट करता है मुल्क राज आनंद। उसमें दिखाता है आपको कि that dichotomy which is going on between Dalits and the people who are belonging to dominant caste. उसमें even ये भी दिखाता है कि actually that novel is not related to Dalits only, the problem of Dalits only. In Untouchable, Muluk Raj Anand is actually talking about a greater problem, a problem which has been with us since the inception, we could say even since times immemorial, since the beginning of this world, the problem of this dichotomy between Western world and Eastern world. Actually, this problem has been, portrayed by Muluk Raj Anand in his novel Untouchable in a better way. So you read this Untouchable, you could even see the problem of this, the problem this how colonial powers were looting the natural resources, the natural resources of countries of Indian subcontinent, how they were subduing through their power क्लास के सर्जन के वो लोगों को कैसे वो जुल्म करते थे। ही इज टॉकिंग अबाउट actually the British power, the British colonial era. He's talking in this, he's talking about this problem of British imperialism in this novel. So there is this dichotomy going on between the Western world and Eastern world since centuries. That the problem that the Western world is always looking at the East, that there is this stereotypical image in the minds of the Western people. They feel the people who are living in the East, they are primitive, they are backward, although अब बहुत फर्क आई है, अभी भी कुछ चीजें हैं ये, स्पेशली व्हेन यू अगर आप 19th 20th सेंचुरी अर्लियर 20th सेंचुरी की बात करोगे, लेकिन अभी भी आपको ये कुछ ट्रेट्स मिलते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में। दे लुक एट द वेस्टर्न वर्ल्ड, they are from a stereotypical point of view. They feel Eastern civilization, it's not only confined to Eastern civilization. Even you could even bring Western African continent in this phenomena as well. Even the people who are living in Latin America as well. So the people living in Europe, in Western world, they feel that East is an exotic place. This is typical stereotypical image. They feel it's an exotic place. The people who are living in the East, they are primitive. They are possessing traditional bent of mind. They believe in superstitious beliefs. So, dear learners, we will talk about this during the next lecture. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
नमस्कार मु कालुचरण शतपथी इग्नू द्वारा परिचालित यह स्वयं प्रभा कार्यक्रम आपको स्वागत करुच्ची। आज आम बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी फंडामेंटल्स पुस्तकर BNC 132 यूनिट ब्लॉक 2 यूनिट 8 और 9 आलोचना करवा। यूनिट 8 रे तार मुख्य प्रसंग अच्छी प्रजातिर संज्ञा और पृथ्वी मुख्य प्रजाति डिफाइनिंग रेस एवं मेजर रेसेस ऑफ द वर्ल्ड। यूनिट 9 रे क्राइटेरिया ऑफ मेजर रेसेस रेशियल क्लासिफिकेशन बा प्रजाति वर्गीकरण विभिन्न कारण बा विभिन्न लक्षण मान। सो ये जो यूनिट ब्लॉक 2 यूनिट 8 जो विषय रही प्रजाति संज्ञा और प्रजातिर वर्गीकरण से साधारणतः पृथ्वी रे देखा मुख्य प्रजाति मानक विषय रे आलोचना करवा यथा निग्रोइड ग्रुप्स कृष्णकाय, कॉकसॉइड ग्रुप श्वेतकाय, मंगोलॉइड ग्रुप पीतकाय। पर ये जो वर्गीकरण प्रक्रिया क्रिटिकल एनालिसिस तार गोटे तार जो क्रिटिसिजम अच्छी ता संबंध भी आलोचना करवा। परिशेष यदि आम देखा आम ए कौन शिखा आम प्रथमतः जाना पृथ्वी रे केते प्रजाति और केते उपप्रजातिर मानव गोष्ठी अच्छा। द्वितीयतः ये जो मुख्य प्रजाति निग्रोइड, कॉकसॉइड, मंगोलॉइड ता विषय में आम सम्यक ज्ञान भी पाइबा। प्रथम आम ये प्रजाति कौन से संबंध में मुझे परिचित कराई। प्रजाति कथा आम जो कहू साधारणतः आम समस्ते मानव और समस्ते होमोसैपियन बोली आम परिचित आज जो मानव। किंतु जो आम पृथ्वी पृष्ठ को देखू से विभिन्न प्रकार मानव गोष्ठी देखा जाती। आउ ये जो मानव गोष्ठी आम भीतर जो विभिन्नता देखा जाए ताहा लाक्षणिक सम्य वैषम्य हो पारे बा वंशानिक वैषम्य द्वारा भिन्न भिन्न देखा जाते। कार जेनेटिक कज हो पारे बा फिजिकल फीचर को लेकिन किसी अलग आम देखा जाती। कहू गले ये प्रजातिकरण प्रक्रिया गोटे बड़ जटिल प्रक्रिया। बोधे मानव विज्ञान जो जर्नी बा उत्पत्ति ये प्रजातिकरण प्रक्रिया प्रजाति को वर्गीकरण करने प्रक्रिया को ही आरंभ होते कॉलोनियलिज्म यूरोप रे तार चरम शीर्ष थिला से समय रे से माने जो संस्था आफ्रिकीय एसीय विभिन्न महादेशर मानव गोष्ठी मान संस्पर्श से जो मूल प्रसंग मनीष मनीष भाया किसी विश्वास करुले लेसर ह्यूमन्स। जदि आम प्रजातिर कॉन्सेप्ट आखिर अर्थ जदि चेष्टा करवा यह एक संपूर्ण बायोलॉजिकल बायोलॉजी जैव बेस्ड जैविक अनुसंधान पर्यवेसित। किंतु मूलदुआ पड़ता यार जो आरंभ एते सुंदर नथिला जो परिणाम हमको भोग्य द्वितीय। तो अंत एंथ्रोपोलॉजी को गोटे विभाग को जदि किसी टणा जाए ताहले ये प्रजाति अध्ययन बा प्रजाति वर्गीकरण जो कार्यक्रम एंथ्रोपोलॉजी रे 1800 शताब्दी रे वैज्ञानिक पद्धति आरंभ होता एवं तार अंत घटी विंश शताब्दी द्वितीय विश्वयुद्ध पर। सो से जहाँ एकविंश शताब्दी प्रारंभ अनेक एक्चुअली ये जो आर जो वैज्ञानिकरण प्रक्रिया अच्छी प्रजातिर सी
से होते ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर आपको समस्ते रिजेक्ट करथिले देयर इज नो बायोलॉजिकल और जेनेटिक बेसिस ऑफ रेशियल क्लासिफिकेशन किंतु वर्तमान जेतल देखा जाउची अनेक क्षेत्र अछि जोटे ये जो प्रजाति अध्ययन जो ज्ञान सेटा हमर आज जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी अछि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अछि सेथिरे अनेक व्यवहार करी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन व्यक्तिर परिचय को निदान करने पाई ये अनेक साहाय्य करे अनेक आम अनेक समय देखिए जैव मानव विज्ञान जो प्रयोग मान देखीजे स्वास्थ्य समस्या को लेकिन हो बा आमर विभिन्न प्रकार उपकरण आमर विभिन्न प्रकार जटिलता को जदि आम अनुध्यान करवा ताहले जो 200 वर्ष जो अध्ययन प्रजातिकरण प्रजाति केमिति सृष्टि मानव प्रजाति गोष्ठी माने केमिति सृष्टि हेले ता विषय साधारणतः बहुत उपयोगिता आम मन करवा तार आवश्यकता बढ़ी बहुत तो प्रथम जो आरंभ होती साधारणतः मनुष्यर जो दृश्यमान जो लक्षण मान को लेकिन ही प्रजातिकरण प्रजाति पर अध्ययन आरंभ होती जोड़ा हम कहते फिजिकल फीचर बा मॉर्फोलॉजी को लेकिन आरंभ होती सो ये जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स रे साधारणतः आमर स्किन रो जो पिगमेंटेशन चुट्टीर कलर शेप ऑफ नाकर साइज गठन मुंडर गठन मुहर गठन आकार आखिर आकार कलर लंब आउ अंगूठा छाप आ प्लामार प्रिंट्स को लेकिन ही प्रथम आरंभ होती सोमाटोस्कोपी सोमाटोमेट्री एंथ्रोमेट्री डेमाटोग्राफिक्स ये सब जिनस को लेकिन साधारणतः नृतत्वविद जो पॉपुलेशन मानव विविधता को स्टडी करने ପାଇଁ गोटे अभिनय प्रचेष्टा आरंभ करथिले किंतु मु पुणी आपण मान को कहिए जेतले प्रजातिर एंथ्रोपोलॉजी विषय जो स्थान अछि प्रजाति अध्ययन ता संपूर्ण भिन्न ये एक्चुअली जेतबेले आमे कहूचे ये भौगोलिक स्थिति आ बायोलॉजी रो बा जैविक जो यूनिकनेस अछि जोटा कि आमे इनहेरिट करके आनु पीढ़ी पर पीढ़ी ताकू नै कि आकू गोटे वर्गीकरण क्लासिफिकेशन रो गोटे अभिनव प्रयास आरंभ होइतला यार कौन से सामंजस्य नहीं रिलीजियस ग्रुप बा धार्मिक अनुष्ठान सहित बा भाषा भित्तिक बा कौन से आमे भारतीय ये प्रजाति नुह द्राविड ये प्रजाति नुह आर्यन ये प्रजाति नुह प्रजाति जिते आम कहूचे तार गोटे जैविक पृष्ठभूमि रही अनुवांशिक जेनेटिक पृष्ठभूमि रही से जिते आम बुझा दरकार जे it is a geographic pattern of human variation based on some biological trait that distinguishes human populations. So विभिन्न मानव गोष्ठी को रो जो स्थिति तार जो जैविक आउ जेनेटिक जो यूनिकनेस अछि ताकू बेस करके ये गोटे अभिनव प्रोसेस सो द ग्रेटेस्ट डिवीजन ऑफ मैनकाइंड बेस्ड ऑन such traits which follows Mendelian inheritance या गोटे समय थिला जेतोले हमें दृढ़तार सहित कहूथिले अनेक समय हमें देखिचे 1700 शताब्दी रे साधारणतः जेतोले आरंभ होईची ये भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थ्रू द्वारा प्रभावित होइतला कहिना यूरोप रो जेते दार्शनिक थिले प्रथम एक्चुअली इमानुएल कांट जर्मन स्कॉलर से ताकर याको एक्चुअली लेखारे से प्रकाश करथिले रेसेस ऑफ मैनकाइंड परवर्ती समय रे स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस सी एक्चुअली मानव वर्गीकरण को करथिले एवं से जे बायोनोमियल नोमेनक्लेचर जो 1738 मसिया रे से ताकर सिस्टम एंड नेचर पुस्तक रचना करथिले परवर्ती समय से मनुष्य को होमो सैपियनिस जेनस एंड स्पीशीज नेम प्रजाति स्पीशीज मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर हिसाब रे
से बाय दीटा नामकरण जो साइंटिफिक नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस करथिले से समय रे सी भी ये जो मानव समूह को एक्चुअली विभिन्न गोष्ठी मुख्य गोष्ठी चारोटी गोष्ठी से क्लासिफिकेशन करथिले किंतु 1800 मसिया बेले जेतबेले साइंटिफिक रेसिजल आरंभ होला फ्रेडरिक ब्लूमेनबेक भी सी मानव समूह को एक्चुअली ताकर दृष्टिकोण क्लासिफिकेशन करथिले एवं यूरोपियन मान को शीर्ष स्थान रे उपस्थापन करथिले कॉकसस श्वेत काय लोक जो मन कहूचे से मान को से अधिष्ठित करैथिले किंतु उभय कार्टेसिलिनियस फ्रेडरिक ब्लूमेनबेक ईश्वर विश्वासी बा सृष्टिवाद पर विश्वास करुथिले ये विवर्तनवाद पर हमको कौन विश्वास नथिला तो से समय रे जो पंडित माने थिले से मान को भीतर दुई भाग थिले गोटी दुई उभय तो विश्वास करुथिले सृष्टिवाद ऊपर किंतु गोटे थिले एकवंशी उत्पत्ति आउ थिले गोटे बहुवंशी उत्पत्ति मोनोजेनिज्म माने पॉलीजेनिज्म सो सी भी ए जो प्रजाति वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति मध्य रे अधिक मात्रा रे प्रभावित करथिला ता परवर्ती समय रे जेतोडा हमर नुर्मिति आसीची नुर्मिति जेमति फ्रेडरिक ब्लूमेनबेक कार्डियोमेट्री रो आविष्कार करथिले परवर्ती समय रे ता पूर्व भी हमर एंथ्रोपोमेट्री रो आविष्कार हेची ता परवर्ती समय रे डर्माटोग्राफिस स्किन प्रिंट्स विभिन्न प्रकार लक्षण मान सब धीरे धीरे ये जो प्रजातिकरण करिया प्रक्रिया रे ताको साहस रे ग्रहण करा हेची तापर शेष बेले को जेतबेले हमर सेरम प्रोटीन्स 1900 मसिया रे साधारणतः जेनेटिक्स रा पुनः आविष्कार करा हेची तापरे ब्लड ग्रुप रो भी आविष्कार हेची सो विभिन्न डिजीज हॉस्पिटलिटी फिंगरप्रिंटिंग ब्लड ग्रुप मेंटोमेट्री ए सामूहिक कारण नेकी गोटे प्रचेष्टा करा हेची से भितरे अनेक एक्चुअली क्लासिफिकेशन मनुष्य वस्तु जेमति तथा 1898 मसिया रे एक्चुअली डेनिकर एक्चुअली मानव समूह को 29 टी गोष्ठी रे विभक्त करथिले सेही परि 1833 मसिया रे आइक्सटर्ड एक्चुअली तीनोटी मौलिक ग्रुप रे मानव समूह करथिले एवं 18 टी उपजाति हिसाब रे क्लास करथिले जेतोला हमें आज भी मानव को जति अनुकूल देखुचे विविधता को देखुचे ताले देखिबा प्रजाति मुख्य प्रजाति तार उपजाति तापर जाति तीनटा वर्गीकरण हमें साधारणतः देखिबा प्रमुख प्रजाति हेले हमर कॉकसॉइड मंगोलॉइड निग्रोइड बा कॉकसॉइड श्वेतकाय लोक निग्रोइड कृष्णकाय बा ब्लैक पीपल्स एंड द येलो पीपल्स दैट इज मंगोलॉइड बा पीत वर्णर लोक सो से परि बॉयड 1950 रे 50 मसिया रे एक्चुअली सी रक्त को नेकी रक्तर वर्गीकरण को नेकी ए प्रजाति रो वर्गीकरण को गोटे अभिनव चेष्टा करथिले सी भी तांकर क्लासिफिकेशन करथिले हम मन रे निश्चय प्रश्न आसीबो जे ए प्रजातिकरण बा ए जो मानव समूह केमिति प्रजाति उपजाति रे जाति रे विभिन्न गोष्ठी रूप रे एक्चुअली परिणत हेची ना हम विवर्तनवाद भी जानि परिबा जे कोनसी परिवर्तन ता विभिन्न इवोल्यूशनरी फोर्सेस थ्रू दिके पीढ़ी पर पीढ़ी आसी थाए जथा नेचुरल सिलेक्शन बा प्राकृतिक निर्वाचन जीन फ्लो म्यूटेशन हाइब्रिडाइजेशन जेनेटिक ड्रिफ्ट ए सब प्रक्रिया माध्यम रे ही हमर जो जेमति हम अन्य प्राणी मान भीतर वेरिएबिलिटी देखुचे सेही मनुष्य मानव भीतर मध्य जो विभिन्नता में देखुचे सेटा मध्य एही प्रक्रिया द्वारा ही साधारणतः घटी थाए किंतु शेष रे मु कहिबी आमे समस्त एक आ समस्त होचती होमो सेपियन्स से जाहो जेतोले आमे पृथ्वी रे देखा जाउथवा प्रमुख बा मेजर रेसेस ऑफ द वर्ल्ड कथा कहिबा सेतोले तीनोटी हमर आसे किछि पुस्तक रे चारोटी भी लिखा अछि निग्रोइड कॉकसॉइड मंगोलॉइड सॉरी
सो निग्रोइड कॉकसॉइड मंगोलॉइड निग्रोइड बा कृष्णकाय लोक साधारणतः सब साहारान अफ्रीकान कंट्री रे देखा जाती एंड तांकर फेशियल कैरेक्टरिस्टिक बहुत यूनिक थाए अन्य प्रजाति मान तुलना एंड साधारणतः से माने अफ्रीका को रिप्रेजेंट करती एंड तांकर मुख्य लक्षण गुड़ाक है तांकर शरीर चर्मर कलर होची कला वर्णर बा कला ब्राउन मिश्रित ओके तो सही परि भाव में केशर वर्ण मत कृष्ण अटे शरीर चर्म रंग कला मिश्रित धूसर अटे जो ब्लैक ब्राउन ब्लैक कलर हो पारे आउ अनेक समय हरिद्रा तथा ताम्र वर्णर मध्य स्किन आम देखा पाऊ नासिकार आकार चौड़ा आउ नोज इज ब्रॉड एंड फ्लैट इन शेप नासिकार मूल आउ अनुन्नत एवं चौड़ा थाए मोटा चक्षुर रंग गाढ़ कृष्ण बा ताम्रवर्ण थाए लिप्स थिक एंड एलिवेटेड बा जदि आम देखा ओठटा मोटाड़िया और बाहर को बोली होला परि देखाई थाए बाहरी आसता है मोटा मोटा थाए आ बॉडी रे माने शरीर रे जदि आम लोम कथा देखा अति कम देखा मिले से परि भाव में आफ्रिकीय ये जो मुख्य प्रजाति रहिला निग्रोइड तार अनेक उप प्रजाति अच्छे से गुड़ा ट्रू निग्रोस फॉरेस्ट निग्रोस निलोटिक निग्रोस हाफ हर्मिटिस बांटू स्पीकिंग निग्रोस बुशमैन हॉटेंटर्स पिग्मिस बेदास प्री-दार्विनियंस एंड जदि आम आपको भी देखा जिते सब तार उप प्रजाति गुड़ाक अच्छा साधारणतः निग्रो को जदि चाहिए आम दुई भाग विभक्त कर प्रथम रही आफ्रिकीय निग्रो बा जो मैंने आफ्रिकार बसवास करती आउ हूँ ओशियानिक निग्रो जो मैंने बाहर अदर देन आफ्रिका रहती सो जो आफ्रिका निग्रो बा ट्रू निग्रो कहली से लक्षण गुड़ाक साधारण आम देखा पाए से ट्रू निग्रोस निग्रोर प्रमुख मीन्स प्रजातिर जो लक्षण मान सब ट्रू निग्रो मान भितर थाए साधारणतः माने पश्चिम आफ्रिका रे बसवास सेनेगल रिवर रे आउ टू ईस्टर्न पार्ट ऑफ नाइजीरिया रे माने बसवास करन तांकर प्राय शरीर उच्चता 5 फीट एंड 5 फुट 8 इंच थाए आउ तांकर जो आर्म आउ लेग रो जो लंब स्टडीली बिल्ड थाए ओके स्किन कलर तो निहती कृष्णकाय आउ मुंड साधारणतः इलांगेटेड आउ समय गोटे प्रोग्नाथिज्म माने जो मुखमंडल टिके बाहर को प्रोजेक्टेड होता है प्रोग्नाथिज्म सेटा सेटे सुंदर भाव से कम्युनिटी रे देखा जाए आउ शेप ऑफ द नोज इज ब्रॉड एंड फ्लैट एमाने साधारण सुदान उगांडा आउ तार से पाखापाखि अंचल बसवास करती एंड तांकर कौन हुए ना लॉन्ग आर्म विथ शॉर्ट लेग्स ओके से मानकर लॉन्ग गोड़टार लंब कम थाए हाथ अपेक्षा एंड लिप्स आर एलिवेटेड ओठटा एलिवेटेड थाए एंड बॉडी बिल्ड ऑफ दिस पीपल आर मस्कुलर माने गठन मध्य शरीर मस्कुलेचर करते सिमिलरली फेस्ट ऑफ प्रोट्रूडिंग प्रोग्नाथिज्म मध्य लक्षित हो जाए ऑर्थोग्नाथस एंड प्रोग्नाथस ऑर्थोग्नाथस साधारणतः मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स आमर जो लोअर एंड अपर जा आगु बाहरी न थाए जेतले आमे बानर मान सहित कंपैरिजन करू सीटा से माने प्रोग्नाथस किंतु वर्तमान मनुष्य मान भीतर जति आमे भी ये जो भिन्नता देखिबा अफ्रीका मानकर साधारणतः अन्य मानव अपेक्षा तांकर लोअर एंड मिडिल
अपरजा टिके समानता आगु थाए जोटा प्रोग्नेंसी कहते सिमिलरली आम भितर नीलोटिक बा नील नदी उपत्यकार बसबास करुवा निग्रोस सेमान शारीरिक गठन वैशिष्ट्य हूँ चर्मर रंग घन पृष्ठ शरीर उच्चता हाराहारी 5 फुट 10 इंच रु बा 178 सेंटीमीटर शरीर गठन सूक्ष्म गोड़ जो यथेष्ट लंबा देखा जाए ओके मस्तिष्क अति लंबालिया जार सेफालिक इंडेक्स बा कपाल सूचांक होची हाराहारी 71 टू 74 मध्य थाए सेमती मस्तकर केश लोमपरी क्षुद्र सोटा गोटे निग्रो प्रजातिर गोटे लक्षण नासिका चौड़ा मुखमंडल समस्त टिके उन्नत थिबा देखा जाए सिमिलरली आम जो देखा अन्य प्रजाति अन्य जमती बुशमैन एंड हटनटट दुईटा गोष्ठी अच्छा शारीरिक गठन अनुसार बुशमैन हटनटट एक प्रजातिर अंतर्भुक्त किंतु सामान्य शारीरिक गठन प्रभावित अनुसार से अलग अलग भाव में विवेचना करा जाए सांस्कृतिक प्रभाव मध्य भी देखा जाए हटनटट साधारणतः खोई खोई बोली कहुए और बुशमैन को क्वाइसान बोली कहुए बुशमैन हटनटट शारीरिक गठन वैशिष्ट्य मध्य मस्तकर केश क्षुद्र और साधारणतः क्षुद्र होता है पेपर करन बोली कहुए जेहेतु केशर जो गठन जो पड़ी केशर रंग कला थाए मुख और शरीर अन्यान्य अंगर घन लोमा बोली देखा जाए किंतु संपूर्ण भाव देखा जाए बुशमैन मानकर चर्मर रंग सामान्य ताम्र हरिद्रा वर्ण थाए हटेट मानकर चर्मर रंग रक्ताक्त हरिद्रा वर्ण होता है चक्षुर रंग घन धूसर बा पृष्ठवर्ण होता है यहपरी भाव में उच्चता 5 फीट 3 फीट हटनटट मानकर देन अन्य मीन्स बुशमैन मानकर 4 फीट 11 इंच थाए यहपरी भाव में आम सिमिलरली आम जो देखा से भाव में पिग्मी प्रजातिर लोक मानकर भी शारीरिक गठन अति शॉर्ट स्टेचर जो मैंने कहती जोटा पिग्मी मान को अति प्राचीन मानव हिसाब से ग्रहण करते पीपल बोली लक्षण है से माने उच्चता शरीर उच्चता अति क्षुद्र 8 फीट 4 फीट 8 इंच गठन आउ दे ओली माने कुचकुंचिया जो चुटी एवं स्किन कलर येलोइश ब्राउन हरिद्री जो कृष्णकाय टाइप टू ब्लैक कलर ओके साधारणतः से माने से प्रोग्नाटिज्म पाखे देखा जाए जियोग्राफिकली से माने Congo region in Africa to Malaya and Eastern Sumatra, Andaman Island, Philippine Island साधारणतः देखा जाती एपरी भाव में अनेक प्रजाति उपजाति निग्रो प्रजाति अच्छी गोटे अच्छी बेदास माने साधारणतः श्रीलंका बा सिलोन रे देखा जाती हाराडी हाइट उच्चता होची 5 फुट एंड से भली वेबी एंड स्लाइट कर्ली हेयर शरीर रे थाए चुट्टी रे कलर मध्य ब्लैक फेशियल हेयर बहुत कम थाए बॉडी हेयर मध्य कम थाए हस्तर मीन्स ऊपर भाग लिम्ब रो हेड स्मॉल थाए देन द लेग्स सो एभली अनेक प्रकार अच्छा प्री डायबिडियन ऑल्सो प्री डायबिडियन माने एनादर निग्रो प्रजातिर गोष्ठी उपजाति से माने सेंट्रल एंड साउथ इंडियन बुझाए एवं द ओल्डेस्ट इनहेबिटेंट ऑफ दैट रीजन मध्य पाए अति प्राचीन से बसवास करिबा एवं साधारणतः से माने भील, गॉन, ओरा, केदार, गुरुम्बा, बनियान
ये प्रजाति जो आदिवासी अछंती आज सेमानकु बुझाई थाए तांकर शारीरिक लंब प्राय 5 फुट 2 इंच होता है हारारी 157 सेंटीमीटर होता है ब्लैक टू ब्लैक हेड रो साइज डोलिको सेफालिक होता है हेड साधारणतः टिके बडाणिया बा रेसिडिंग था आ ब्रो रिजेस मॉडरेट डेवलप आखिर जो गोलता पर जो रिज अछि सेटा भी प्रोमिनेंट माने अन्य मानक अपेक्षा सो से भली जापान रो अन्यू also considered the original inhabitants of Japan and semane forced to migrate to northern regions semane Hakikoto and Sakhalin Island of the northern part of Japan rahanti semanako be growth of facial and head hair is seen and skin color madhya brown to white tankar color and tankar harari uchchata hoji 5 feet एवं 2 इंच and the stocky build मोटा एवं मेजोसेफालिक तांकर मुंडर आकार अनेक प्रकार क्लासिफिकेशन एटोली निग्रो मुख्य प्रजाति को देखिले से भाव में हम जो देखा ककोसॉइड बा श्वेतकाय व्हाइट पीपल जो तांकर भी मुख्य लक्षण गुड़ाक है शरीर जो वर्ण साधारणतः देखा धला एवं तार बहुविध उपजाति अच्छी ककोसॉइड सब ग्रुप बेसी विभिन्न प्रजाति चर्म रंग साधारणतः श्वेत अन्य रंग मिश्रण सहित धूसर वर्ण देखा जाए केते क्षेत्र रे कृष्ण सुधर मध्य देखा जाए ककोसॉइड ड्रेस हम कहूचे साधारणतः यूरोप रे देखाती केशर आकार भिन्न भिन्न प्रकार अटे ता सड़क तरंगायित मीन्स स्ट्रेट एंड वेवी हेड स्किन कलर may range from white to brown head hair is generally wavy ba tarang but may be straight shape of head shows large variety narrow headed to broad headed okay semti nakota thickno narrow and pointed है मुहटा बा फेस स्ट्रेट और प्रोग्नाथिज्म प्राय न था चिक बोन आर नॉट प्रोमिनेंट ओठ जनरली आउट मोटालिया जेमति हमें निग्रो रेस दिले से बोली एंड forehead and chin are relatively prominent okay so ei भलिया तांकर स्वतंत्रता थाए ककोसॉइड प्रजाति बा श्वेतकाय लोक मानकर आकर बहुत अनेक उपजाति अच्छी मेडिटेरियन नॉर्डिक अल्पाइन डायनारिक आर्मिनॉइड हामिटिस ईस्ट ब्लाटिक लाप्स इंडो द्राविडियन पॉलिनेशियंस ओके जेत हम मेडिटेरियन मानक कथा कहबा बा भूमध्य सागरीय आदिवासी मानकर तो एमा नामकरण मान सेमानक अवस्थिति अनुसार निर्णय करा जायछि जेतु सेमाने मेडिटेरियन सी उपकूल रहंती एमानक भूमध्य सागरीय प्रजाति भाव कह जाय पारे किंतु सेमाने केवल ए अंचल देखा न जाए अन्य अंचल मध्य देखा जाती सो एहिपरि भाव में साधारणतः उत्तर भारत भिन्न भिन्न अंचल विक्षिप्त भाव देखा जाते खाली जे नुह से मेडिटेरियन जगह रहती कह गले एक्चुअली पोर्तुगाल स्पेन फ्रांस इटाली ग्रीस टर्की उत्तर आफ्रिका सॉरी केतेक अंचल ये प्रजातिर गोष्ठी देखा जाते या व्यतीत अरब ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान भारत मध्य प्रजातिर लोक देखा जदिव प्रत्येक भूमगत सागरीय प्रजातिर सभ्य माने समान प्रकार शारीरिक गठन वैशिष्ट्य प्रदान करिथांती तथापि सेमानकर विशेष शारीरिक गठन वैशिष्ट्य थाए से ताको अनेक प्रकार भी मेडिटेरियन मान को क्लासिफाई करा है नॉर्थ इंडिया हो कि अरेबियन हो कि मेडिटेरियन यूरोपियन हो प्राच्य मेडिटेरियन जमती भूमध्य क्लासिक मेडिटेरियन कथा कह जाए अटलांटिक मेडिटेरियन इंडो अफगान मेडिटेरियन ये भाव में कह जाए
तो सेमती आम देखा नॉर्डिक जोटा कि जो मानकर कि ये आउ गोटे उपजाति ककसइड बा श्वेतकाय लोकंकर एमाने साधारणतः चर्मर रंग श्वेत केश सड़क सामान्य रंगायित एवं सामान्य कुंचुकुंचिया होता है। केशर रंग भिन्न भिन्न प्रकार यथा रक्त धूसर ईसर धूसर पाउंस धूसर स्वर्णवर्ण व स्वर्ण धूसर होता है। केशर आकृति सूक्ष्म व मध्यम होता है। मुख और शरीर लोम परिमाण स्पष्ट अटे। मस्तक लंब व मध्यम धरण होता है। कपाल सूचक व सेफालिक इंडेक्स टू 79 सेंटीमीटर अटे। आने उच्चता प्राय 5 फुट 8 इंच हाराहारी थाए 172 सेंटीमीटर अटे। ये प्रजाति लोक साधारणतः स्कैंडिनेवियन आदिवासी अंतर्भुक्त। यह व्यतीत बाल्टिक उपकूल उत्तर जर्मनी उत्तर फ्रांस नेदरलैंड अंचल बेल्जियम ब्रिटिश द्वीपपुंज देखा। सिमिलरली आलिफाइन शारीरिक गठन जब देखा से चर्म रंग ताम्रवर्ण अटे। केश ईसत धूसर कृष्ण धूसर व सामयिक कृष्णवर्ण अटे। लोमर परिमाण यथेष्ट अच्छे। जदि आम मुख और शरीर देखा केशर आकृति सूक्ष्म व मध्यम धरण उन्नत कपाल नासिका संकुचित से शरीर लंब 5 फुट 5 इंच बा 165 सेंटीमीटर थाए। मोटालिया सशक्त शरीर शक्त मोटालिया थाए। यही अल्पाइन प्रजाति साधारणतः मध्य यूरोप तथा फ्रांस बाल्कान्स डेनमार्क नॉर्वे उत्तर इटाली एशिया माइनर पर्वत अंचल साधारणतः देखा। अनेक अच्छी आर्मिनॉइड्स से माने श्वेत रंग उच्चता 5 फुट 6 इंच 163 सेंटीमीटर थाए। से माने तुर्की सीरिया पैलेस्टाइन आर्मिनॉइड वेराइटी लोक। लाप जो माने कि साधारणतः स्कैंडिनेवियन स्वीडेन उत्तर फिनलैंड नॉर्वे उत्तर पूर्व रशिया देखा। लाप माने चर्म रंग माटिया हल्दी बा हल्दिया धूसर वर्ण होता है। केशर रंग साधारणतः कृष्ण धूसर व कृष्ण वर्ण अटे। उच्चता प्राय 5 फुट 3 इंच 69 सेंटीमीटर थाए। से मस्तक बा सेफालिक इंडेक्स 84 सेंटीमीटर अटे। यही सब जिन प्राय दे आर नॉट प्रोग्नाथिजम दे आर ऑर्थोग्नाथिक। सिमिलरली इंडो द्राविडियंस व द्राविडियंस माने मध्य उच्चता 5 फुट 4 इंच अटे। नाजल इंडेक्स होची 77 सेंटीमीटर। सेफालिक इंडेक्स होची 73 टू 66। कृष्ण धूसर वर्ण अटंती माने एवं साधारणतः मान कला सामान्य कुंचुमुटिया अटे। यही श्रेणीभुक्त। सेमती पॉलिनेशियंस कथा कहवा एमानकर भी शरीर चर्मर रंग ईसत धूसर रहता है। केशर रंग पृष्ठकाय थाए बा केशर आकार सड़क तरंगिया सामयिक वक्र मोड़ामोड़ी होता है कुंचुकुंचिया जोटा कहुए। एवं एमानकर सेफालिक इंडेक्स बा कपाल सूचक 82.6 अटे। सो एमती विभिन्न प्रकार एमाने साधारणतः पॉलिनेशियन साधारणतः प्रशांत महादेशर पॉलिनेशियन द्वीपपुंज तथा न्यूजीलैंड समोआ सब हवाई मॉरिशस इत्यादि द्वीपपुंज देखा। तृतीय प्रमुख प्रजाति जहाँ कि आम मंगोली बा को पीत काय व्यक्ति साधारणतः चाइना जापान एवं भूखंड मान देखा स्वतंत्र थाए। किसी स्वतंत्र लक्षण मानक नहीं शारीरिक लक्षण मान नहीं यथा मस्तक केशर रंग कला स्ट्रेट हेयर्स दे आर नोन फॉर एपिकांथियल फोल्ड जो आखिरे स्वतंत्र देखा जाए। मंगोलीय
फोल्ड बा चक्षुर विषय अंजियोग्राफी तापर मुखर आकार चेप्टा चौड़ा और कंडक्टिव विशेष उन्नत देखा जाए ए skin color vary from yellowish to yellowish brown, head is from brachiocephalic, hair color is black and texture of hair is generally straight, cheekbones are very prominent, very upper eyelids skin known as epicanthium fold, एठाकर स्वतंत्र लक्षण hair density dense जो सांद्रता density per unit of body surface is very less था या भीतर हम देखा चारिटी सब ग्रुप बा उप प्रजाति सेंट्रल और क्लासिक मंगोलॉइड्स जार की then Arctic mongoloid by Eskimoids, American Indians or Amerindians, Indonesian, Malaysians. ये मालयास जो चारि भाग रे व्यक्त कराई छै यदि हमें सेंट्रल क्लासिक मंगोलॉइड कथा कहबा एमानकर कपाल बा सेफालिक इंडेक्स 85 सेंटीमीटर 85 अटे एमाने मस्तकर केश सड़क मोटालिया और पृष्ठवर्ण अटे शरीर विभिन्न अंग मुखमंडल लोम विशेष परिमाण में देखा जाए ना एपिकैंथियन फोल्ड जो डाखिर सेटा प्रोमिनेंट है ए प्रजातिर अधिवासी बुरियात केनियाक तिब्बतीय इत्यादि प्रधान जगह अवस्थित करती तापर आसुची हमर जोटा कि विभिन्न प्रकार मीन्स mongoloids, northwestern coast mongoloids, then brachiocephalic mongoloids, dolichocephalic mongoloids, Amerindian mongoloids or Indonesia mongoloids. So Indonesia mongoloids कथा तो कहछि एमान को सेमाने साधारणतः चीन, इंडोनेशिया, ब्रह्मदेश, थाईलैंड, मलयकोपकूल अंचल में बसवास करती तांकर शरीर उच्चता 5 फुट 1 इंच टू 1 इंच थाए बा 155 सेंटीमीटर अटे सेमाने साधारणतः सूक्ष्म उच्चता विशिष्ट और शारीरिक गठन क्षीण अटे नासिका संकुचित दीर्घ अटे कपाल सूचक 78.5 अटे सेमती अमेरिंडियंस जतल कथा कहूची एई आदिवासी माने ठारे मंगोलीय गठन वैशिष्ट्य विशेष भाव देखा गले मध्य अन्यान्य प्रजाति लक्षण मध्य परिलक्षित हुए अन्यान्य प्रजाति वैशिष्ट्य मध्य श्वेतकाय ऑस्ट्रेलिय एवं सामान्य निग्रो वैशिष्ट्य मध्य मान पाखरे देखा जाए अमेरिंडियंस बा अमेरिका भारतीय बा अमेरिंडियंस जोटा कहा जाए से टाइप रो जो मिसा इसी टाइप रो देखा जाती है मार्कर एवं एमानकर शारीरिक गठन वैशिष्ट्य मध्य केशर रंग कला सामान्य धूसर अटे केशर आकार सड़क बस मोटालिया बा सामान्य तरंगायित होता है सो एपरी भाव में आर्किक बा एस्किमो मंगोलॉइड्स बा जो माने रहंती सेमानक लक्षण मध्य से बड़ी भाव में स्ट्रेट हेयर्स एपिकैंथियन फोल्ड शॉर्ट स्टेचर ग्लोबुलर बॉडीज इशू कैरेक्टरिस्टिक्स द्वारा साधारणतः हमें व्यवहारीकरण करिथाउ तो से ये जो प्रजातिकरण प्रक्रिया जेपरि कहबी या भीतर एक मुख्य प्रजाति मानकर कॉकोसॉइड मंगोलॉइड निग्रोइड मानकर किछटा हमें एठी आलोचना करिले किंतु यार 200 वर्षर गोटे इतिहास अछि पृष्ठभूमि रे यार मुख्य जो साइंटिफिक रेसिज्म कथा कहउतला आकु कि समझते खंडन करछ एकविंश शताब्दी में साइंटिफिक तार कारण हला ई जो क्लासिफिकेशन बा वर्गीकरण प्रक्रिया रे एटा आर्बिट्रेरी रूट थिला जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन भौगोलिक जो आर व्यक्ति को नेकी गोटे आकु आलोचना कराइतला बा वर्गीकरण कराइतला आ अनेक समय हमें देखि जे कोनसी रेस रो प्योरिटी नाही गोटे रेस रो लक्षण अन्य रेस रे भी देखियो पाए अन्य रेस लक्षण अन्य रेस आ कोनसी हारो गुणशक्तिक बेसिस बा एक्सक्यूज मी आई एम सॉरी सो नो जेनेटिक बेसिस बा कोनसी प्रकार जेनेटिक आर पृष्ठभूमि ना नथिला से आकुस्थान स्पेयर क्रिटिसिज्म बोली कहै पारे बा कौन साइंटिफिक बेसिस नथला जदियो आपको साइंटिफिक रेसिज्म बोली को
କୁହାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ये जो रेशियल क्लासिफिकेशन बा जो प्रजातिर वर्गीकरण कौन सब मानदंड मान सब आम व्यवहार करते जदि आम ताको दुई भाग विभक्त करवा गोटे हूँ मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया आ गोटे हूँ आकृति को लेकर मनुष्यर शारीरिक लक्षण को लेकर गोटे प्रकार वर्गीकरण आउ गोटे हूँ सेरोलॉजिकल बा जेनेटिकल रक्त संबंधी बा जेनेटिक अनुवांशिकी गुणमान को लेकर क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजिकल बा जो आकृति विज्ञान संबंधी जो क्लासिफिकेशन से प्रथम आसो आपको पुणी दुई भाग व्यक्त करें गोटे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक जोटा आम देखिपर आउ गोटे मापी पार सो जमी पिगमेंटेशन ऑफ दिस चर्मर रंग चुटीर रंग केशर रंग तार टेक्सचर जमी मपामपी आम कर मुंड फॉर्म्स फेस फॉर्म्स आई स्ट्रक्चर उच्चता आउ डर्माटोग्राफिक्स बा स्किन ब्रिज यही सब जिन साधारणतः को लेकिन प्रजाति वर्गीकरण कराए सिमिलरली सेरोलॉजिकल बा जेनेटिकल क्राइटेरिया भितर आसो आमर रक्तर विभिन्न वर्ग जमी एबीओ एमएन आरएच सिस्टम सिमिलरली एबीएच सिक्रेटर नॉन सिक्रेटर पुष्टि संबंधी सेमती पीटीसी फिनाइल थायोकार्बोनेट टेस्ट एंड अदर जेनेटिक मार्कर्स नहीं करा जाए जिते आम रक्त जिते आम वर्ण को नौचे ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स को नौचे साधारणतः आम तीन प्रकार पृथ्वी नौचे लिकोडर्मा बा श्वेतवर्ण पीतवर्ण बा एंथोडर्म एंड मेलोडर्म्स बा कृष्णकाय सहज आम देखी पार्थ्वा जे पृथ्वी रे विभिन्न रंगर मानव गोष्ठीर व्याप्ति सेमती शरीर केश को लेकिन जो आम वर्गीकरण कथा कहे अनेक प्रकार जमती स्ट्रेट और स्लिक जोटा मंगोलॉइड संप्रदाय प्रजाति देखा जाए लियोट्रिकस वेबी साइमेट्रिकस फ्रिजली एंड वुली इलोट्रिकस जोटा कि साधारणतः निग्रो प्रजाति देखा जाए एंड वेबी प्राय समस्त प्रजाति देखा जाए सो सिमिलरली आम जो देखुचे हेयर कलर एंड टेक्सचर सो ब्लैक एंड ब्राउन आम ऑलरेडी आलोचना कर सारी जे यूरोपीय मानकर चुटीर वर्ण ओके ब्लैक और डार्क ब्राउन आउ किसी जगह देखा पाइब ब्लॉन्ड एंड फ्रॉम ब्राउन टू इवन रेड कलर हेयर जोटा साधारणतः यूरोपियन मानक देखा जाए ट्रॉपिकल कंट्री समस्त प्राय कला दूसर कला टाइप रंगर देखा मिले जदि आम हेयर थिकनेस जदि देखा टेक्सचर जदि देखा 56 माइक्रोन टू 57-58 माइक्रोन थिकनेस वेरी करे एवं ये भी जिते आम देखा मंगोलॉइड टू निग्रोइड वेरी थिन है मंगोलॉइड वेरी स्ट्रॉन्ग हेयर्स सेमती सेफालिक इंडेक्स जहाँकि मनुष्यर मुंडर प्रस्थ डिवाइडेड बाय तार जो लंब मल्टीप्लाई में 100 जिते आम नहीं कैलकुलेसन करवा से आम 3टा प्रकार श्रेणी एक्चुअली सेफालिक इंडेक्स लोक साधारणतः पाई था गोटे हूँ ओलिकोसेफालिक बा दीर्घ कपाड़ी मध्य कपाड़ी बा मेजोसेफालिक पृथक कपाड़ी बा ब्राक्योसेफालिक सो ये जो सेफालिक इंडेक्स को लेकर जो प्रजाति मुख्य प्रजाति और तार जो सब उप प्रजाति गोष्ठी अच्छी से अनुसार आम पृथ्वी रे क्लासिफिकेशन करता सेफालिक इंडेक्स बा कपाल सूचकांक कह जाए सेमती मॉर्फोलॉजिकल फेशियल इंडेक्स माने ये सब जिनसर जो कथा कहली प्रोट्रूडिंग जा प्रोग्नाथिज्म ऑर्थोग्नाथिज्म प्रोग्नाथिज्म टा बेसी देखा जाए निग्रो प्रजाति रे ऑर्थोग्नाथिज्म प्राय अन्य प्रजाति रे प्राय साधारणतः ऑर्थोग्नाथिज्म जोटा कि प्रोट्रूडिंग जा न थाए सिमिलरली मॉर्फोलॉजिकल फेशियल हाइट कहले मॉर्फोलॉजिकल फेशियल लेंथ डिवाइड बाय बायजाइगोमेट्रिक ब्रेथ बायजाइगर टू मापिबा तार जो जेतिकी आसीबो फेशियल हाइट जोटा कि
internal naja suture frontal nasion, the distance between landmarks nasions and gnathion dita landmark ଅଛି ତାର जो ଲମ୍ବ ଯାହା ଆସିବ ସେଇଟା ତା divide by bijagment with ଲମ୍ବ into 100 ସେଠାରେ ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷକୁ କ୍ଲାସିଫିକେସନ କରାଯାଏ ଫେସିଆଲ ସେମିତି ନାଜାଲ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ହେଉଛି ନାକର ଉସାର divide by ଲାମ୍ବର ନାକର ଉଚ୍ଚତା multiply by 100 so ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର broad nose narrow nose ସେ ସବୁ classification କରନ୍ତି scientists have tried to give explanation on shape of nose in terms of ecological adaptation खाली क्लासिफिकेशन है परवर्ती समय न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जेतले वासबर्न इंट्रोड्यूस करचंदी से समय नाक गुडाकर हमर की भलिया जेमि कला काय कृष्णकाय लोकंकर गोटे एडाप्टेशन थाए टू कोप विथ दिस यूवी रेडिएशन जोटा श्वेतकाय लोक मान पाखे प्राय न थाए स्किन कैंसर साधारणतः श्वेतकाय लोक माने आक्रांत होती सेमती जो ने हॉट एनवायरनमेंट रे रहंती तांकर नाकर गठन तांकर एडाप्टेशन टू से एनवायरनमेंट भिन्न थाए सो lower projecting nose of the people of Central Asia has been considered as an adaptation to the cold environment so सेटा विभिन्न रूल भी जैविक माने प्राणीविद माने मते छै ग्लोबल रूल एलेंस रूल आ भीतर भी परवर्ती समाज माने पढ़ी पारथि सेमते आखि को नेकी जेतना हम आखिटा अछि गोटो गठन को नेकी गोटो अछि तार आइरिस कलर को नेकी गठन देतल देखुचे मंगलय प्रजाति नाकर स्वतंत्रता थाए जे से माने साधारणतः एपिकैंथन फोल्ड बा जोटा कहछि आखिर जो पर्दा जो सेटारे स्वतंत्रता थाए आउ दैट इज यूनिक टू मंगोलाइटिस चाइनीज जापानीज समानकर आई फोल्ड बहुत प्रोमिनेंट थाए आउ सिमिलरली जदि आपने कलर ऑफ आइरिस देखिबा सेटा वेरी करबा ब्लैक ब्राउन ग्रीन ब्लू ओके एंड मंगोलॉइड एंड निग्रोइड हैव आइरिस कलर ब्लैक एंड ब्राउन किंतु जदि हमें कॉकसाइड रहतिबा श्वेतकाय लोककर देखिबा ताकर बहुत रेंजेस ऑफ कलर देखा जिवो ब्लू आई हमें जो ग्रीन आई ब्राउन सो अपार्ट फ्रॉम ब्लैक एंड ब्राउन सो ये भी ए भली आखिर रंग आखिर गठन को नै मध्य प्रजातिकरण मध्य करा जायछि these are all observable traits सेमते स्ट्रेचर उठ होछि मेजरेबल जोटा मपा जाय पारे सेम जदि हम देखिबा जो साधारणतः उच्चता बा उच्च व्यक्ति गोटे सोशल प्रेस्टीज बा गोटे हमें इट इज सिंबल ऑफ सोशल प्रेस्टीज एंड tallest boy and tallest girls everybody appreciate means they like so stature टा गोटे कल्चरल कंस्ट्रक्ट बा सोशली कंस्ट्रक्ट भी हेता किंतु आर बायोलॉजिकल मेकानिज्म अछि सबु मानव गोष्ठी रे समस्त उच्चता सेम थाए जेंति पिग्मी मानकर मु आलोचना करछि आप सेते ताकर उच्चता होछि आरे 130 सेंटीमीटर कम जेतले कहै छै टॉल कहबा जेतले 170 टू 179 मध्ये जार उच्चता अछि वेरी टॉल मींस 180 टू 179 पर्यंत giants means 200 centimeter onwards so एपरि भाबरे जेतलो वर्गीकरण कराइ छै मानव प्रजाति को नेकी विभिन्न गोष्ठी तार उच्चता देखाइ छै पिग्मी कहले हम साधारणतः शॉर्ट स्टेचर ली धरिनो से मंगलोइड माकर बिंदु शॉर्ट स्टेचर बिचाय किंतु ये जो स्टेचर और शॉर्टनेस और लॉन्गनेस से फॉर द एडाप्टेशन जदियो ता भीतर गोटे सोशल बायस मध्य यार गोटे विवर्तनिक आ गोटे होची अनुकूलन बा एडाप्टेशन पृष्ठभूमि अछि आ गोटे बहुत मीन्स इंपोर्टेंट एरिया हला हमर स्किन प्रिंट्स बा डर्माटोग्लाइफिक्स स्किन प्रिंट जापान लिप्स रही पारे फुट रही पारे सो स्किन प्रिंट्स को नेकी मत वर्गीकरण कराइ छै साधारणतः वर्गीकरण जेतो हमें कराउची सेतरे हाथ अंगूठी आउ हमर पाद ए तीनटा को नेकी साधारण वर्गीकरण प्रक्रिया कराइ छै आ ये जो वर्गीकरण प्रक्रिया रे अंगूठी रे हमें साधारणतः
तीनोटी मुख्यतः 4टी जगह 5टी तार प्रकार पाई तो तीनोटी है आर्क लूप एंड होल्स लूप गुड़ाक पुणी आउे दुई भाग विभक्त रेडियल लूप अलनार लूप आम साधारणतः शंख चक्र हिसाब से तार पैटर्न को देखिक क्लासिफिकेशन कर रेडियल मीन्स रेडियस बोन आड़े जोटा ढलिकी है सेटा रेडियल जोटा अलनार बोन थाए सेटा अलनार बोन्स बोली कहा जाए साधारण आम जो देखू आउटे भीतर अच्छे ट्राई रेडियस 3टा रीड्स मीटिंग पॉइंट डेल्टॉइड्स डेल्टा जो फॉर्मेशन होची सो यार जो डिस्ट्रीब्यूशन आर्क लूप्स होल्स ओके ये भी सब प्रजाति रे समान भाव में सम परिमाण रे देखा जाए सब प्रजाति रे सब देखा जाए किंतु समस्त परिमाण जमती एशियन मानकर लूप्स बहुत देखा जाए आर्क्स में आम साधारणतः बेसी पाइबू आफ्रिका मान भाग सेमती सब प्रकार जिन सब माने प्रकार फिंगर पैटर्न हुए सबुठु मुख्य गोटे समय मुख्य लक्षण हिसाब से ग्रहण करा कहीं ना यहाँ परमानेंट आर 3टी प्रिंसिपल अच्छी परमानेंस यूनिकनेस एंड यूनिवर्सल प्रत्येक मनुष्य पाखे प्राय देखा जाए बहुत कम जोटे आम पाइबानी द्वितीयतः हूँ साधारणतः यहाँ प्रत्येक व्यक्तिर यूनिक थाए सेमती प्रत्येक प्रजाति को लेकिन जब आम वर्गीकरण करूँ से भी आम भिन्न भिन्न आपको पाई तापर आम आसवा सेरोलॉजिकल एंड जेनेटिक क्राइटेरिया ये भी 1900 मसीहा जो विंश शताब्दीर आरंभ हो समय मानव समाजर जो वर्गीकरण प्रक्रिया से भी तार चरम शीर्ष छुई था से समय जेनेटिक्स आविर्भाव एबीओ ब्लड ग्रुप डिस्कवरी पॉपुलेशन जेनेटिक्स ये सब को मिसेकी आपको सुदृढ़ करागला जे एटा हूँ बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ मैनकाइंड बाय डिवीजन ऑफ मैनकाइंड से प्रमुख थिला ब्लड ग्रुपिंग भितर एबीओ एमएन आरएच ब्लड सिस्टम से भाई भाव में एबीएस सिक्रेशन सिस्टम फिनाइल थायकार्बोनेट बा पीटीसी टेस्टिंग एबिलिटी आउ अदर जेनेटिक मार्कर्स जदि आम देखिए एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम साधारण आम 4टी ब्लड ग्रुप पाई गोटे ए बी बी एबी एंड ओ सो सेटा हमर स्पेशल ओरिजिन ट्रेस करिया पई बा प्रजाति वर्गीकरण करिया पई तार उत्पत्ति में मध्य सहायता करथे जदि हम देखिबा जिप्सी इन हंगेरी had ABO blood group frequency similar to the Hindus of North India rather than those of Hungarians. जो जिप्सी संप्रदाय लोक हंगेरी रे बसवास करंती सेमानकर सामंजस्यता अछि नॉर्थ इंडियन लोक मानक सहित देन हंगेरियन सिमिलरली linguistics found commonality with the language of Gypsy in Hungarian and the Hindus of North Indian and suggests that the Roman might have migrated from India to Hungary around 500 years ago. So ABO block type नहीं खाली हमें देखने जैसे A type, B type, AB type, O टा सबटू अत्यधिक मात्रा एशिया अफ्रीका पॉपुलेशन देखा जाए आम किसी मात्रा B परिमाण A B पाऊ किंतु जो भाषा ब्लड ग्रुप नहीं कि आम गोटे हाइपोथेसिस कर परिबा जे किए कोठी उत्पत्ति हेतला केबे कोठु किए माइग्रेट करकी अन्य जगह को जाइला सो सेमती से बड़ी अनेक प्रकार तथ्य बा वैज्ञानिक माने पाइछंती से बड़ी आउट ब्लड सिस्टम हैला एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम तार एक्चुअली 3टा फिनोटाइप थाए जोटा कि एमएन एमएन आ सेटा दुईटा डोमिनेंट एमएन एमएनएम दुईटा को डोमिनेंट फॉर्म मध्ये थाए तो एम ब्लड ग्रुप जति हम देखिबा तार डिस्ट्रीब्यूशन एस्किमोन पाखरे एम ब्लड ग्रुप टाइप 83% देखा जाए मेक्सिकन माने 62% देखा जाए और सबुठ लोएस्ट ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन पापुआन्स माने पाखरे एम टाइप देखा जाए सिमिलरली एन ब्लड ग्रुप टाइप जति हम देखिबा ऑस्ट्रेलियन मानकर एबोरिजिन पापुआन 67.4% 69% रेस्पेक्टिवली देखा जाए एस्किमो मेक्सिकन इंडियन सोर्स लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ एन टाइप ब्लड ग्रुप One of the striking similar MN blood group system is American Negroes and Pygmies of the Africans. तो हमें देखिएगा जे एतरो
गोटे जिन आमर रेसियाल उत्पत्ति आम किए कौटू आसी जे भली आम जो रेस से कहे प्योर रेस कॉन्सेप्ट इज ए मिसनोमर सिमिलरली आरएच ब्लड ग्रुप जो कहते हैं साधारण पृथ्वी में जैसे बसवास करते दीटा जेकोसी ब्लड ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव बा ओ पॉजिटिव नेगेटिव साधारण आम ए आरएस जीन को नहीं कहता जोटा कि रेसस मंकी रो एटा को उत्पत्ति कराई आर विभिन्न 8 डिफरेंट आर एक्चुअली वेराइटी अछि जदि आम देखिबा RH negative gene देखिबा 20 to 50% in European and Asians, about 20% in some African population and 10% American Indians. Sorry. So जदि आम देखिबा RH positive RH negative रो डिस्ट्रीब्यूशन RH positive negative रो frequency बहुत परिमाण देखा जाए यूरोपियन पॉपुलेशन when compared with the African and Asian populations. And the CD gene, 8 variety CD gene complex has been observed in about 13% of Australians and 7% of South African population. And of this, the remaining RH negative gene complex, CDE, have been very small proportion, while CTE not been detected in all populations. So, कही RH gene complex, Asian and Malaysia have the highest frequency, followed by Europeans 50%, Africans RH complex found have the lowest frequency 10%. एथुरु आमे विवर्तन रो उत्पत्ति तार क्रम विकास जोटा में देखु म्यूटेशन फॉलोड बाय माइग्रेशन ए दीटा जदि हम प्रिंसिपल देखबा मानव विवर्तन रो मध्य ये किछि सुराग जोगे थाए से खाली प्रजाति यह आमर उत्पत्ति आमर क्रम विकास बा आमर जर्नी इवोल्यूशनरी जर्नी संबंध में ज्ञान प्रकाशित करता है सेमती दी प्रकार जीन अच्छी जोटा कि सिक्रेटर नॉन सिक्रेटर जीन्स सेटा को एबीएस सिक्रेटर कहती एंड से एबीएस सिक्रेटर जदि हम देखिबा सो डोमिनेंट सिक्रेटर जीन होची एसी नॉन रिसेसिव स्मॉल एसी सो अध्ययन जना पड़छि जे व्हाइट मान पाखरे 85% सिक्रेटर जीन जर्मन व्हाइट 78% and American Negro 61% and whereas this सिमती अन्य टाइप रो भी देखा होची सो किछि पॉपुलेशन हम देखिबा सिक्रेटर्स आर मच हायर देन द नॉन सिक्रेटर्स दैट आल्सो गिव अस प्रजातिकरण खाली वर्गीकरण सेटा मत हमर इवोल्यूशनरी जर्नी इवोल्यूशनर ये विषय कहि सिमती टेस्टर नॉन टेस्टर फिनल थाई कार्बोनेट जो माने चाखी की बीटा टेस्ट पात हम टेस्टर पा जाए नॉन टेस्टर जो माने टेस्ट कले कौन प्रकार तार स्वाद पाई पारते अमेरिकन इंडियंस अफ्रीकन निग्रोस हैव मोर देन 95% of the populations as the tester while Australian aborigines have the lowest 27% are testers okay similarly हम देखिबा अदर जेनेटिक फैक्टर रे चारिटा जिंस अछि गोटे होची हीमोग्लोबिन थैलेसेमिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज हेप्टोग्लोबिन हीमोग्लोबिन रो विभिन्न प्रकार नॉर्मल हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन नै हम प्रजातिकरण करथौ आर गोटे सिकल हीमोग्लोबिन बा म्यूटेंट हीमोग्लोबिन थाए जोटा अफ्रीका एशिया महादेश देखा जाए यूरोप रे प्राय देखा जाएनी एंड ताकू नै कि मध्य हम वर्गीकरण करथौ थैलेसेमिया मध्य बा मेडिटेरियन एनीमिया जोटा कहै छै मेडिटेरियन बा कुलिस एनीमिया मध्य कहै छै या भी ताकू नै कि मध्य वर्गीकरण करा जाए सिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज जोटा कि मध्य गोटे डिजीज जार कि ये सब समस्त डिजीज मध्य हमर मलेरिया डिजीज सहित भी रहता है हेप्टोग्लोबिन हेप्टोग्लोबिन मिया जोटा कि अफ्रीका महादेश रे साधारणतः देखा जाए तो एई परि भाबे हमें गोटे जटिल प्रक्रिया देखि वर्गीकरण बा जो रेशियल क्राइटेरिया माने यूज करथिले आ सेही क्राइटेरिया भी हमर ए प्रजातिर वर्गीकरण संभव होई परिछि आशा करूची आपण माने समस्त एथर उपकृत हेतिबे धन्यवाद नमस्कार।